ओके, स्टार्ट करते हैं हम। कहाँ गया? शेयर द स्क्रीन। अपना व्हाइट बोर्ड। ओके, जैसा कि हमने कहा था, लास्ट चीज हमारी जो बची थी यूनिट थर्ड में, दैट वाज शुर्स थ्योरम। आई डोंट नो हाउ इट इज प्रोनाउंस, हो सकता है ये हो स्कुर्स या शुर्स or whatever. So but let's call it Schur's theorem. I think this is the last thing in our unit third. फिर भी अगर कुछ और बचा होगा तो देख लेंगे। So it says that जैसे कि अभी तक हम ये inequalities करते आए हैं, let qx be a polynomial of degree n minus 1, and if and modulus of q of x is less than equal to some m times square divided by root of 1 minus x square for all 1 minus less than x strictly 1 पे तो infinity हो जाए। Yeah, okay. 1 less than x less than 1 minus 1 less than x less than 1, then q of x in mod is less than equal to n times m for all x lying between minus 1 and 1. So this is what we have to do. So what we now do now we do something very interesting. We say let xk, k runs from 1 to n, be the zeros of the Chebyshev's polynomial. Be the zeros of the Chebyshev's polynomial of first kind and you know what is that? Tnx. And then of course जैसे तुम्हें पता है इसके zeros कैसे होते हैं, for the sake of it चलो हम लिख देते हैं कि अगर इसका मतलब हुआ कि Tn of xk is equal to 0, which means that, what does that mean? That means cos of, if you take you know that हमारे लिए इसकी इक्वेशन क्या है, we've got Tn of cos of theta is equal to cos of n theta. तो अगर मैं theta को पुट करता हूँ cos inverse of x, so I will get Tn of x is equal to cos of n of cos inverse of x. So same thing here. So it means that cos of n theta would be 0, where theta would be cos inverse of x sub k. इस तरह से होगा, मतलब सेम थिंग है, इसको मैंने थीटा माना और फिर थीटा must be this thing, then this must be true. इससे पहले भी हम कर चुके हैं क्लास में. So n theta would be the odd multiple of pi by 2. Of course k an integer, लेकिन चूंकि हमें distinct चाहिए, so which implies that theta must be equal to 2k by minus 1 pi by 2n, where k is an integer. Is an integer. So since we are only admitting, so it means that theta किसके बराबर है? Theta is equal to cos inverse of xk, right? So cos inverse of xk is equal to 2k minus 1 into pi by 2n, which means that your roots होंगे, interestingly होंगे cos of 2k minus 1 pi by 2n. और ऑफ कोर्स ये इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज है, बट इसमें सिर्फ ओनली n वुड बी डिस्टिंक्ट, यानी हम k के वैल्यूज देते जाएंगे. सपोज मैं अगर 1 से n तक जाऊं, उसके बाद वो रिपीट होते जाएंगे. सो लेट मी एडमिट कोई और आ गया.
So these are the roots of Chebyshev polynomial. They are distinct. That is, zeros are, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. That is, I would have x1 equal to cos of pi by 2n. अगर मैं इसको 1 देता हूँ, as you can see, k को 1 दूंगे तो it would be 2 minus plus 1. इसी तरह से फिर होगा 3 x2 किसके बराबर होगा? Cos of 3 pi by 2n. इसी तरह से करते करते I would have last one 2n minus 1 into pi by 2. This would be xn. And you can see something. कोई cos of something है, so they must always lie between -1 and 1, जो भी इसके zeros है. Furthermore, अगर मैं cos का देखूं, you see that cos pi by 2n is positive, so I am looking here at these points here, है ना? अब चूंकि ये जो numbers हैं pi by 2n, 3 pi by 2n, so this is increasing, है ना? अगर x पॉजिटिव रेंज में इंक्रीज करेगा, लेकिन जो cos है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी इनमें सबसे बड़ा ये होगा और सबसे छोटा ये होगा. You know, they are cos of numbers which are increasing. So जब पॉजिटिव में x इंक्रीज होता है तो cos what है ना 0 पे 1 होगा वो, लेकिन फिर वो डिक्रीज होता जाएगा अप टू pi by 2 और फिर और डिक्रीज होता जाएगा इनटू नेगेटिव वैल्यू. सो इन एनी केस जो पहला वैल्यू आएगा यहाँ पे cos of pi by 2n, क्योंकि pi by 2n सबसे छोटा है इनमें से, फिर 3 pi by 2n, 5 pi by 2n. So x1 would be the largest. Now note that x1 is the largest zero and xn the smallest. Also n theta चूंकि बराबर है 2k minus 1 into pi by 2, it means sine of n theta would be equal to sine of 2k minus 1 into pi by 2, and odd multiples of pi by 2 पे sine का वैल्यू या तो +1 होगा या -1 होगा. Just to remind that, right? Now for all x's such that mod x is less than equal to x1, मान लो mod x अगर x1 से छोटा है, which is equal to cos of pi by 2n, मेरा सबसे बड़ा zero, which is of course less than equal to 1, it implies that x square is also less than equal to cos square pi by 2n, which of course would be equal to 1 minus sine square pi by 2n. So which implies that अगर इसको यहाँ थोड़ा interchange करेंगे, you will get 1 minus x square is greater than equal to sine of pi by 2n. And in case you remember last जो Jordan's inequality हमने की थी last time, Jordan's inequality कहती है if theta lies between 0 and 2 pi, which does in this case, है ना, क्योंकि n कोई integer है तो ये तो pi by 2 से, sorry, if theta lies between pi by 2, then sine theta is bigger than equal to 2 divided by pi into theta. मतलब ये हमने कल किया था, लास्ट टाइम किया था परसों. अगर थीटा acute है तो sin theta is bigger than equal to this thing. So this is theta, so it means it is bigger than equal to 2 by pi into theta, that is pi by 2n. तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं Jordan's inequality. So which is the same thing as 1 by n. So which implies also it's given that q of x जो है in modulus is less than equal to m divided by root of 1 minus x square. So which of course would be less than equal to by this condition, because 1 by root of 1 by x square is less than equal to m. So in this case हमने prove कर लिया. Now we have to show that modulus of q of x is less than equal to n. So we have proved that in this case, when modulus of x is less than equal to the largest root.
सो अब हम दूसरे केस में करेंगे व्हेन cos x1 मॉडुलस ऑफ x इज बिगर देन। अब मॉड ऑफ x जो है या तो वो लेस देन इक्वल टू x1 होगा या ऑफ कोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू। सो दैट वुड बी आवर नेक्स्ट केस। now if x1 is less than equal to modulus of x, of course I am looking within the range less than equal to 1. Then what we do, we use Lagrange's interpolation formula. Then by Lagrange's interpolation formula, जो हम बहुत बार कर चुके हैं, interpolation formula with x1 जो कि n points है, as basic points of interpolation, as basic points of interpolation, we have, I can write q of x as, अब तुम्हें पता ही है, summation q of xk divided by, you have to remember that q is a polynomial of degree n minus 1. अगर ये polynomial of degree n minus 1 है, इसको extrapolate करने के लिए हमें n distinct points चाहिए, और हमारे पास है वो tn जो है उसके n zeros, और Lagrange's interpolation के हिसाब से ये बन जाता है x minus xk, k runs from 1 to n, और हमें मल्टीप्लाई करना होता है एक तो उस पॉलिनोमियल से जिसके ये जीरोस है, यानी दैट वुड बी tnx, और डिवाइड करना होता है c के डेरिवेटिव से बट इवैल्यूएटेड एट xk. सो दिस इज Lagrange's interpolation when x1 x2 xn are zeros of tn. So let's call this equation star. Now we know that tnx जो, और I can just simplify it, इसको यहाँ लेता हूँ मैं क्योंकि इसका k के साथ कोई कनेक्शन नहीं, तो देन आई कैन राइट जिन चीजों का k के साथ कनेक्शन है उसको वहीं पे रहते हैं, x minus xk into tn, oh sorry यहाँ डैश क्योंकि ये तो जीरो है, tn at x, t dash n at x. Okay, so once we are here, now we know what is tn. Tn of x is equal to cos of n times cos inverse of x. And what would be, therefore अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करता हूँ with respect to x, क्या मुझे मिलेगा, एक तो मुझे मिलेगा साइन ऑफ दिस थिंग, साइन ऑफ n cos inverse of x multiplied by differentiation इंटरनल, एक तो n आएगा, cos inverse x की डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस की प्लस, मुझे लगता है या तो माइनस दिस थिंग है या प्लस दिस थिंग है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, माइनस है, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ प्लस, ठीक है, ओके. So which implies that modulus of tn dash at x is equal to n times sine of n cos inverse of x, right, into modulus of, और यहाँ मुझे xk लिखना था, सॉरी, xk क्योंकि मुझे ये देखना है ना, tn dash at xk divided by square root of 1 minus xk square, mod जब मैं इसको लगाऊंगा which is equal to, और मैंने ये किया है कि ये जो under the xk पे जो ये वैल्यू होगा it is just plus minus 1 because these are just odd multiples of pi by 2. So this is just n divided by positive square root of 1 minus xk square. Okay, so इसको इसमें substitute करेंगे star में, so therefore from star I would have summation qx divided by tnx is less than equal to summation k runs from 1 to n modulus, इनको बाहर निकालते हैं, mod को divided by x minus xk 1 by of course tn at xk, और जो कि मैंने अभी इवैल्यूएट किया वो किसके बराबर होगा, that would be यहाँ पे
So इसको यहाँ लाएंगे. So it is n divided by root of 1 minus x square. Of course, तो वो बन जाएगा summation k runs from 1 to n mod of q of xk divided by mod of x minus xk. And this should be equal to square root of 1 minus xk square whole divided by n. Okay. Now we know something else. We know that जो हमारा Schur theorem में hypothesis है वो ये कि qx is less than equal to this thing, provided x lies between -1 and 1, or xk's lie between -1 and 1. All those values lie between -1 and 1. So in particular, q of xk would be less than equal to m times this thing. तो वो हम यहाँ लिखेंगे. Okay, so it means that this is less than equal to summation k runs from 1 to n. Q of xk is less than equal to m divided by root of 1 minus xk square. Of course, then I have root of 1 minus xk square यहाँ भी और यहाँ n है. Of course, I have 1 by mod of x minus xk. So, which is equal to m, ये और ये cancel हो गया, m by n into summation k runs from 1 to n, 1 by x minus xk in mod. Let's call this double star. Now we have this situation. I've got x1 is less than equal to modulus of x less. मतलब ये मैं वो वाला केस कर रहा हूँ. अगर ये इससे less है mod of x, then we are already done. So what could be, x is a real number here. So what could you have? It means that x lies between x1 and 1, and of course minus x also lies between x1 and 1. क्योंकि x या तो in the case of real numbers या तो plus x हो सकता है या minus x हो सकता है. So this would imply, अब चूंकि सबसे बड़ा root है, it implies that xk is less than equal to x1 because x1 is the largest root, is less than equal to x is less than equal to 1. यहाँ हम लिखेंगे for all k running from 2 3 या 1 to up to n भी, क्योंकि तब तो बराबर होगा. ठीक है, k runs from, और यहां से मुझे मिलेगा minus xn is less than equal to minus x1, क्योंकि देखो xn is the smallest है ना, so x1 is less than equal to xn. I should, हाँ ठीक है. So I would have xn minus xn is less than equal to minus x1, which would be no. मैं अभी क्या किया, जरा इसको ठीक करते हैं. ये तो ठीक है यहाँ तक. दूसरे केस में, okay, I have x1 is this thing, so it implies that should I write it like this, minus xn, जो कि पहले इसको करते हैं थोड़ा ठीक. So I would have x1 is less than equal to minus x. What does that mean? That means x जो है अगर दोनों साइड से माइनस करेंगे would be less than equal to x1. No, minus x1. Or minus x1 would be less than or equal to minus xn, of course, which would be less than equal to about no 1. It should be, I think, less than equal to minus, just a minute, इसको ऐसे ही रखते हैं, यहाँ तक ठीक है. Next step में हम देखेंगे. Okay, now from this we get this, क्योंकि x1 सबसे बड़ा था तो माइनस में ये सबसे छोटा हो जाएगा. So we should have a situation like this. So that means what? I've got some problem here. By so you have got x, यहाँ तक तो ठीक है. So x would be 10. So you have x
So what x1 lies between this thing, so then ये होगा और ये होगा, right? And you have to remember that x lies between -1 and 1. I have to keep that in mind. That's okay. So it means minus x also lies between -1 and 1. That's ANC. So what should I have? So you have got x is less than equal to x1, which is less than equal to minus xn. So can I say that x1 is less than equal to minus xn? हम कर सकते हैं. हाँ, एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट था, इसके लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा और मुझे समझ आना यहाँ क्या करना होगी. Let me do it this way. देखो, I have got now x1 is less than equal to minus x. तो दूसरा वाला case which is less than equal to 1. Now what I realize is that x1 is actually cos of pi by 2n and xn जो है वो है cos of pi into 2n minus 1 by 2n. Yes. So this would be equal to cos of pi minus pi by 2n. क्योंकि इसको यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 minus 1 by 2n बिल्कुल सही, which is nothing but minus cos of pi by 2n. अब सही, that is equal to minus x1. So it means that minus x1, it means x जो है वो लेस देन इक्वल टू है माइनस x1 के, लेकिन वो लेस देन इक्वल टू है xn के, मतलब लेस देन इक्वल टू के इक्वल टू है. यहाँ थोड़ा सा ये बराबर है x1 जो है वो बराबर है xn के. ऑफ कोर्स xn चूंकि सबसे छोटा है वो लेस देन इक्वल टू है xk के फॉर ऑल k रनिंग फ्रॉम 1 to up to n, जो कि लेस देन इक्वल टू है 1 के. सो अब से once we use this relation, वही मुझे लग रहा था मुझे सब कुछ मिसिंग है. तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स व्हाट? अब देखो इस सिचुएशन से हमें मिला कि x के x से छोटा है, so it means in this case या तो x minus xk is greater than equal to 0 for all k running from 1 to up to n, या फिर यहां से अगर मैं लूं it means x minus xk is less than equal to 0 for all k running from 1 to up to n. इसका मतलब या तो सारे के सारे पॉजिटिव है, ये जो यहाँ नंबर्स है ना इधर बैठे, या सारे के सारे नेगेटिव है. इसका मतलब मैं मॉड हटा सकता हूँ, सिर्फ मुझे माइनस ऐड करना है. मतलब अगर सारे पॉजिटिव है तो ऐसे ही रखना है, अगर सारे नेगेटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई करना है. सो दैट मेक्स द जॉब इजी. सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स अगर ऐसा है तो फ्रॉम डबल स्टार, मैंने इसको कुछ नाम दिया था, हाँ, फ्रॉम डबल स्टार I should have q of x divided by tn of x is equal to m by n into summation 1 by x minus xk, ऐसा हमें मिला था. k runs from 1 to n, right? So which implies that q of x is equal to m by n summation 1 by x minus xk in mod, in case it is positive, into mod tn of x, and which we know is less than equal to 1. So which, but I can write this as m by n. As you can see, this is just tn dash of x. अगर तुम्हें याद हो इसको हमने बहुत बार यूज किया है, क्योंकि इसके जीरोस है तो ये इसके बराबर होना चाहिए. So that is actually equal to m by n
modulus of Tn dash of x. So what does that mean? तो जो मैंने यहाँ मॉड लगाया था इसको मैं बाहर लगा सकता हूँ, जस्ट चेंज ऑफ साइन, या तो सारे पॉजिटिव है या सारे नेगेटिव. तो व्हाट डज दैट मीन नाउ? अब ये और ये कैंसिल हो गया, एंड वी नो दैट व्हाट इज दिस, m by n tn of x जो है tn dash of x वो है एक्चुअली m by n. सो हमने इससे पहले लिखा था कहीं पे, कहाँ गया वो, कहाँ गया, हाँ ये जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया था, मेरे पेज पे ही किया था, tn dash of x किसके बराबर था, अरे या तो मुझे यही फिर से निकालना पड़ेगा. सो यू गॉट tn of x, I can write it as tn of theta is equal to, अच्छा ये लिखता हूँ मैं, tn of cos of theta is equal to cos n theta. So that means tn dash of, डिफरेंशिएट अगर करेंगे so you should have minus sin theta, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आना चाहिए minus sin n theta into n cos theta. So ये और ये कैंसिल हो जाने, कैंसिल नहीं होगा. It means that tn dash at cos theta in modulus, ये खत्म हो गया तो ये चलेगा, is equal to n into cos n theta, right? Yes, n cos n theta into, of course, mod, write it here, साथ में क्या आएगा, I would have sin n theta divided by theta, मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में. सो ये तो है, सो इसको मैं लिखता हूँ, it would be tn of cos of theta. तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ x lies between -1 and 1. अल्टीमेटली जो मेरी x की रेंज है, तो cos थीटा अगर मैं थीटा को रियल लेता हूँ, cos of theta would lie between -1 and 1. So it should be tn dash of cos theta, which is equal to m by n into mod of n cos n theta into sin n theta by sin theta. Okay, this is less than, ये तो less than equal to n है, so you have m by n into n, and of course ये जो sin n theta by n हम प्रूव कर चुके हैं, this is also less than equal to n, so this and this cancels out and we get n. So I should write that therefore q of x mod is less than equal to n times n, and that proves the theorem. So that finishes our Schur's theorem in both the cases. तो यहाँ पर हमने जो यूज किया ना, ये मॉडुलस जो हमने ये लिया था, देखो अगर ये सारे पॉजिटिव होंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा. मेरे कहने का मतलब है जो हमने मेन चीज यूज की थी यहाँ पे, या तो ये है समेशन 1 बाय x माइनस एक्स की, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज है, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, या फिर ये बन जाएगा समेशन 1 बाय x माइनस एक्स की. बट इन एनी केस जब इसको मॉड लगाएंगे तो ये सेम है, इसका मॉड लगाना और इसका मॉड लगाना सेम होगा जब सारे पॉजिटिव हो या सारे नेगेटिव, मतलब पूरे को फिर मॉड लगा. एनीवेज क्योंकि -1 को मॉड लगाएंगे तो वो एक ही चीज आ जाएगी, या तो ये है या ये है, इसका मतलब मॉडुलस में ये इसके बराबर है, क्योंकि मॉडुलस में माइनस रिजॉल्व हो जाएगा. सो दैट वाज व्हाई वी यूज्ड, हमने बीच में यूज किया वो रूट्स कहाँ. Anyways, so that finishes our Schur's theorem. So now we have got something else in the unit 4 में हम शुरू करेंगे what we call LP inequalities. Again, these are polynomial inequalities. The only thing is we use LP norm. LP norm तुम्हें पता ही है कि it's an integral norm. I mean big LP norm.
उसमें हम नॉर्म लेते हैं लेंथ को, जो हम सोचते हैं वो ये होता है, of course p has to be greater than equal to 1 for it to be a norm, for it to be a length. We integrate over some range, in our case 0 to 2 pi, and then what you have a function here, whatever its function at theta, right? You raise power p and then differentiate it in modulus raised power p, then take 1 by p. Our inequalities are related with integrals of a polynomial over a unit interval. Of course, जैसे वहां पे था on the boundary of a unit interval, यहाँ पर भी वही होगा. So पहला वाला हमारा है Zygmunt's inequality. So Zygmunt's inequality, मुझे लगता है पता नहीं होगा पूरा. Now if pz is a polynomial of degree n, is a polynomial of degree n, then जैसा कि मैंने कहा था, for p greater than equal to 1, for this norm to make sense, मतलब basically triangle inequality तभी होगी when p is greater than equal to 1, जिसको हम कहते हैं Minkowski's inequality. So for p less than 1, that's not true. Actually वो reverse हो जाता है. So we have 0 to 2 pi. If I take p dash of on the boundary, take its pth power, then integrate with respect to theta, then take 1 by p. This would be less than equal to n times, again same thing, 0 to 2 pi, p of e raised power iota theta whole raised power p, and then integrate and then take the, so मैं bracket लगा चुका था, 1 by p. Now this is always true. But the result is sharp, you can easily check. As shown by the polynomial, p of z is equal to lambda and non-zero number. Okay, now what it is saying, जो अगर हम देखें ना Bernstein's inequality क्या कहती थी? Maximum, तो अगर इसको इसके साथ compare करो over this interval, p dash z is less than equal to n times maximum p of z. Now this is our basic inequality, Bernstein, जहाँ से हमने फिर सारा वो refine करके कुछ निकाला. Now इसको अगर मैं in terms of norm कहूँ तो इसका नाम है actually sup norm. तो मैं कह सकता हूँ कि norm of p dash sup norm is less than equal to n times, right? ये. और अगर मैं इस inequality को in terms of norm लिखूं, ये कह रहा है नहीं यही नहीं true है. Norm of p dash जो p to power norm है is also less than equal to n times norm of p जो p to norm है. मतलब different norms में सिर्फ ये इस पे ट्रू नहीं है, बल्कि pth नॉर्म पे भी ये इनइक्वालिटी, अगर सुप नॉर्म पे ट्रू है जो कि है ही बर्नस्टीन इनइक्वालिटी, तो जिगमंड के हिसाब से जिगमंड इनइक्वालिटी सेज नो दिस इज आल्सो ट्रू इफ आई रिप्लेस बाय द सुप नॉर्म, जिसको हम छोटी इन्फिनिटी यहाँ जो हम लिखते हैं ना उससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो pth पावर इंटीग्रल नॉर्म है तब भी ये ट्रू है, बिकॉज वी नो दैट जो ये पॉलिनोमियल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस है, सो देयरफॉर उनकी इंटीग्रेशन आराम, मतलब they are मतलब we can apply integration to them over the range. वैसे this is a sort of a line integral, we are taking the integral over the unit circle. यहाँ पर भी हम z runs from this maximum लेते हैं. In fact, as p becomes very large, this would approach the sup norm. अगर मैं p को let p approach infinity, I would get Bernstein's inequality. क्योंकि pth norm जब p बहुत, इसीलिए इसको infinity से represent करते हैं यहाँ पे, because as p approaches infinity, this norm approaches, मतलब pth norm approaches sup norm. So that's why we place it as infinity here. So that's Zygmunt's inequality, but it's the same as Bernstein's inequality, but we replace this sup norm, the maximum norm, with the integral norm. अब यहाँ पे
डी हम उसी से प्रूव करते हैं जो वहां पे किया था हमने। फॉर द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, लेकिन ये तुम एग्जाम में लिखोगे, हम ये लेमा कर चुके हैं दूसरी जगह। फॉर द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम we need the following lemma। और लेमा हम बहुत बार कर चुके हैं, मतलब यूज भी और मतलब इसको प्रूव भी कर चुके हैं। सो pz इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। मुझे लगता है ये जल्दी खत्म होने वाला है, और चूंकि आज हम कंटिन्यू करें कि नमाज पढ़ने जाना है तुम्हें? हेलो सर नमाज पढ़ने नमाज सर, नमाज। तो हाँ, ठीक है, उसका टाइम है। तो ये जो बंद होगा ना, तो ये मैं दूसरी बार फिर ज्वाइन नहीं करूंगा। अब जहां तक हम पहुंचेंगे वहां तक फिर नेक्स्ट टाइम वहीं से शुरू करेंगे। वैसे ज्यादा है ओके नहीं, 3 मिनट है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, then for p greater than equal to 1, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल हमें लेमा करना है, एंड ऑफ कोर्स एंड z1 z2 zn और द जीरोस, ये हम कर चुके हैं इससे पहले, of z raised power n plus a not equal to -1, then for any complex number t, for any complex number t, और ये हम प्रूव कर चुके हैं बहुत बार एक्चुअली, t into p dash t, ये फिर से मुझे लिखना पड़ेगा वैसे ही। आमिर या उमर अगर तुम हो तो ये अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लेना। is equal to n divided by 1 plus a, p of t plus 1 plus a divided by na, summation k runs from 1 to n, zk, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, p of t into zk divided by zk minus 1 का स्क्वायर, where of course ये important है 1 by n, समय ये भी हम इसमें बीच में प्रूव करते हैं इस लेमा में, that this k runs from 1 to n is equal to minus na divided by 1 plus a का स्क्वायर। मतलब दिस इज द लेमा। ये हम इससे पहले अगर, लेकिन एग्जाम में तुम्हें ये लिखना पड़ेगा अगर ये सिग्नल्स इनइक्वालिटी है, लेकिन किया है हमने इससे पहले इसको कई बार। सो इन पर्टिकुलर इफ आई टेक a इक्वल टू 1, क्या बन जाएगा, a को मैं सिर्फ -1 नहीं ले सकता, बाकी कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, तो मैंने लिया a को 1, सो यू वुड गेट t p dash t is equal to n by 2 p of t plus of course 1 plus a, that means 2 divided by n, right? Summation k runs from 1 to n zk into p of t zk divided by zk minus 1 का square, and of course 1 by n इसमें भी चेंज आ जाएगी, zk divided by zk minus 1 का square, k runs from 1 to n should be equal to minus n, अब क्योंकि ये 1 है, 1 plus 1 is right. So this is what you should get, or summation k runs from 1 to n, in particular when we take, this should be minus n square by 4 when we take any, this is true for